अभी आप यहाँ पे देखो, मेरे बैक साइड में आपको एक बोर्ड दिखता रहेगा जहाँ पे अपना लोगो है, एंड इस लोगो के बाजू में हियर यू कैन सी इन सर्कल देयर इज SM, इन सर्कल देयर इज SM, दैट इज सर्विस मार्क। वो जो नाम है वो हम लोगों ने हमारे कंपनी के नाम पे रजिस्टर करके रखा है। दिस इज आवर ब्रांड नेम, A1 Commerce Academy is our brand name. Our company's name is A1 Academy Private Limited. कंपनी का नाम है एकेडमी, A1 Academy Private Limited। ये हमारा ब्रांड नेम है, ये उसका लोगो है, और इस लोगो को हमने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करके रखा है कि ये ब्रांड नेम, ये लोगो और कोई यूज नहीं कर सकता। रजिस्टर करके रखा है अंडर सर्विस मार्क, इसको आप ट्रेडमार्क भी बोलते हो। ऑथर्स अपने बुक का कॉपीराइट करके रखते हैं। तो ये जो है ये हमारा लीगल मोनोपोली है, मतलब ये दूसरा कोई भी पर्सन जो है हमारे परमिशन के बगैर उसको यूज नहीं कर सकता। Then it would be called as legal monopoly. Then we go to next type of monopoly called as natural monopoly. When the monopoly arises on account of natural factors, when the monopoly arises on account of natural factors, it shall be called as natural monopoly. For example, Gulf countries जैसे लैंड्स ने बराबर बताया, Gulf countries are having huge supply of, or we can say huge availability of oil resources. जैसे you can geographically अगर हम देखेंगे तो the company geographically, if we take up example of New Zealand, it's a grassland, so it has huge grass, तो वहां पे dairy industries का monopoly है. These are all examples of natural monopoly. Can you see my screen? Hello. I have got a prompt, screen sharing is ended. Can you see my screen? Wait, let me check. Now, has it started? Has it started now? Okay, thank you. So that are examples of natural monopoly. Then the ninth type of monopoly, what we have, technological monopoly. When the monopoly arises on account of use of technology, then
such monopoly shall be considered as technological monopoly. Can you give me example? वेरी गुड. माइक्रोसॉफ्ट है, iOS है, एंड्रॉइड है, are best examples of technological monopoly. And last one, the 10th type of monopoly what we have shall be bilateral monopoly. When the monopoly exists on both the sides, bilateral, two lateral sided, two-sided monopoly. For example, मतलब यहाँ पे कैसे रहेगा? नॉर्मली मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. बट बाइलैटरल मोनोपोली में अलग रहता है. In bilateral monopoly, it is observed that there will be single seller and single buyer. Then such monopoly would be called as bilateral monopoly. Even such type of monopoly is very difficult. नहीं है ऐसे नहीं बोलूंगा, but difficult to be found. So there are types of monopoly. Now, today we would be describing another important part of your syllabus, called as relationship between average revenue and marginal revenue. We will be describing the relationship between average revenue and marginal revenue. इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि जब कभी भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये है अपना एवरेज रेवेन्यू को और ये है अपना मार्जिनल रेवेन्यू को, देन ये जब हम कर्व बनाएंगे तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो एग्जैक्टली एवरेज रेवेन्यू एंड वाई एक्सिस उसके एग्जैक्ट सेंटर से पास ऑन होगा. तो ये कैसे, आज हम उतना पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड फॉर द सेशन. मैडम आपने प्लास्टिक का स्केल है क्या? प्लास्टिक का चाहिए. So here as a first part, let me draw axis. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक
बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। So we have drawn x-axis, y-axis, origin. अभी यहाँ पे मैं जब डायग्राम बनाता हूं, say this is average revenue curve. Let us call this curve as average revenue. तो जब हम marginal revenue बनाएंगे, मैं जब marginal revenue कर्व बनाऊंगा, it would pass exactly through the center of average revenue. थोड़ा सा रफ डायग्राम रहेगा, देख लो। अभी ये कैसे, तो we will prove it geometrically. Remember, we all know that total revenue is equal to price multiplied by quantity. Also, total revenue is equal to summation of marginal revenue. तो ये अपना जो कर्व है, ये है marginal revenue कर्व. Now say we are producing ये स्टार्टिंग जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, इसको मैं अभी मैं पॉइंट अलग कलर में लेता हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. पॉइंट में अलग कलर में बनाता हूं उधर. One, let us call this point as point A. B, इधर हमने लिया है रेवेन्यू, इधर है आउटपुट. सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग OQ क्वांटिटी, तो ये B को भी मैं वहां से फिलहाल हटा देता हूं. तो ये अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है at this point. Let us say this is point C, और वहां पे हम लेते हैं पॉइंट B. ये और एक पॉइंट है पॉइंट D. इसको हम ले लेते हैं A, और ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है टॉप वाला, वी विल कॉल इट एज E. लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज E. तो अभी यहाँ पे इस डायग्राम पे से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं अपना. इज दैट विजिबल? तो अभी मैंने टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया आपको. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू
प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। वी हैव स्टडीड, इफ यू रिमेंबर, हमने थोड़े टाइम पहले डिस्क्राइब किया था, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू देखो कितना है, ओ ए, ओ क्यू क्वांटिटी के लिए ओ ए इज द एवरेज रेवेन्यू, तो इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू डी ए इज इक्वल टू ओ क्यू डी ए। अभी आप ऑब्जर्व करो, इज इक्वल टू इधर मैं और एक पॉइंट का नाम दे देता हूं, तो ओ क्यू डी ए इज इक्वल टू, आई कैन राइट, इज इक्वल टू ओ क्यू सी एफ ए प्लस ट्राइंगल सी डी एफ। ये हो गया टोटल रेवेन्यू एक पार्ट पे। दूसरा फॉर्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे जितना भी पार्ट आ गया उसका सम टोटल इज टोटल रेवेन्यू। तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे आ गया ओ क्यू सी ई, मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे आ रहा है समेशन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ओ क्यू सी ई, but that can be written as OQCFA plus triangle AEF. It can be written as this plus triangle AEF. Therefore, OQCFA plus triangle CDF is equal to OQCFA plus triangle AEF. तो इसमें OQCFA cancelled. Therefore, triangle CDF is equal to triangle AEF. अभी वापस से ऊपर जा रहे, थोड़ा वो दो ट्राइंगल सामने लगेंगे तो मैं ऊपर ये वाला स्पेस यूज करता हूं, डायग्राम के बाजू वाला स्पेस, so that you can understand it better. तो हमने अभी बताया ट्राइंगल AEF is equal to triangle CFD. अभी इन दोनों ट्राइंगल में देखो, कैन आई से एंगल A is equal to angle D.
90 degree. Angle F is equal to angle F vertically opposite angle. Therefore, angle E is equal to angle C, remaining angle. तीन एंगल में से दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल रहेगा. तो therefore I can say दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. They are similar triangle. A test of similarity. Both the triangles are similar, and similar triangle can bear measurements of the sides are also equal. So therefore AF is equal to FD. ये दोनों equal है because the triangles are similar, and therefore we can see that AF is equal to FD, which proves that it exactly passes through the center. It exactly passes through the center. Okay, so that is about the relationship. अभी उसमें हम आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे. So I'm concluding with my session. Any doubt you can ask me into the group.